रिकॉर्ड हो स्टार्ट हो स्लाइड्स जरा खोल लीजिए, ये आपका पॉइंटर है? यस Let's set up that. Slides, right? This is like course 1v3, C1W3. कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। So no questions. जी? फीचर और पैरामीटर में सो लाइक मिसाल के तौर पे अगर हम हाउस प्राइस प्रेडिक्ट कर रहे हैं और हमारे पास जो चीज़ें डेटा सेट में दस्तियाब हैं, मिसाल के तौर पे वी हैव एरिया इन स्क्वायर फीट, पीछे से वी हैव एरिया इन स्क्वायर फीट, राइट? We have, for example, the number of bedrooms, right? These are features, right? These are the direct inputs which relate to the prediction that you are trying to make. अच्छा, parameters क्या हैं? Those values that you can adjust. अब input की value तो आप जो है वही रखेंगे, उसको तब्दील नहीं करेंगे, लेकिन parameters क्या हैं जिन्हें आप तब्दील कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे weights. अब आप अगर एरिया को x1 से लाइक रिप्रेजेंट करते हैं तो x1 के साथ आप एक वेट लगा देते हैं कि इसको कितना वेट देना है, दैट इज पैरामीटर। इसी तरीके से आपके पास दूसरा जो फीचर है, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ बेडरूम्स, उसके साथ भी आप एक वेट लगा देते हैं। सो w1 w2 विल बी पैरामीटर्स इन दिस केस, एंड आल्सो b व्हिच इज द इंटरसेप्ट और द लाइक वी से दैट पैरामीटर ऑफ रिग्रेशन और व्हाटएवर, राइट? सो वो चीजें जिन्हें आप फाइन ट्यून कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, दोज आर कॉल्ड parameters in our context, and the direct inputs जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते, inputs को चेंज नहीं कर सकते, so those are like ठीक है यार, थोड़ा बहुत स्टेप अप कर या हाथ सा कर। Okay, so today we will be talking about, कोई और सवाल है? क्लासिफिकेशन, राइट? सो अभी तक हम रिग्रेशन की बात कर रहे थे। रिग्रेशन के अंदर हम आमतौर पे किसी कंटिन्यूअस वेरिएबल को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन सम इनपुट फीचर्स, राइट? क्लासिफिकेशन इन कंपैरिजन टू लाइक रिग्रेशन इज अ लिटिल डिफरेंट प्रॉब्लम, जिसके अंदर आप आमतौर पर लाइक जैसे हम कहते हैं हमारे पास दो किस्म के वेरिएबल्स हैं, एक क्वांटिटेटिव और एक कैटेगोरिकल, राइट? सो रिग्रेशन की आउटपुट क्वांटिटेटिव होती है और क्लासिफिकेशन की आउटपुट कैटेगोरिकल होती है, राइट? सो यू आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट द कैटेगरीज ऑफ समथिंग which will be limited in some sense. For example, if you are trying to like predict is this email a spam, right? The answer to this question will be either yes or no. You can also say 0 or 1, right? So like in this case you are trying to predict the category of something, right? Similarly, is a transaction fraudulent? एक बैंक ट्रांजैक्शन हुई है और बैंक ने इस चीज को मार्क करना है कि ये लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन थी या फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन थी। इसका जवाब क्या होगा? yes या no, again a category. Similarly, if you have like, is the tumor malignant? एक ट्यूमर है, right? And you want to like classify it as either being malignant or benign. कि ये like नुकसानदेह है या नुकसानदेह नहीं है। Again, the answer will be yes or no. So again, categorization. So like this kind of problem is known as
क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। जब आप हाउस प्राइसेस प्रेडिक्ट कर रहे थे तो हाउस प्राइसेस जो कि कंटिन्यूअस वेरिएबल है, those were being classified as regression problem, right? But now we will be talking about classification problems. आमतौर पर जो नंबर ऑफ प्रेडिक्टेड कैटेगरीज होती हैं वो 2 से ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन अगर हम बहुत सिंपल केस लें जैसे ये इज दिस ईमेल स्पैम, तो इसका जवाब यस या नो है। तो अगर आपके पास 2 ही कैटेगरीज हैं जिनमें से आपने किसी एक को प्रेडिक्ट करना है, या वो यस होगा या नो होगा, तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स को कह देते हैं दैट दीस आर बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स, बिकॉज़ द नंबर ऑफ क्लासेस आर ओनली 2। लाजमी नहीं है कि सारे प्रॉब्लम्स बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स ही हों। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के अंदर नंबर ऑफ क्लासेस या नंबर ऑफ कैटेगरीज 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, राइट? फॉर एग्जांपल हमारे पास पार्टॉस में और या टेंसरफ्लो में ऐसी लाइब्रेरीज दस्तयाब हैं। ये शेयर वो भी बड़ी उधर एक शेयर, ठीक है सर। ये भी खाली करनी है, इसको खाली नीचे रखें। ये आ रहे हैं बच्चे। ओके, एक शेयर वहाँ पे है, ये शेयर उठा लें यहाँ से, इसको भी तो शिफ्ट कर दिए, शेयर उठा के ले लो, ये भी दोनों शेयर उधर ले जाएं। ले जा ओके, सो फॉर एग्जांपल आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट कि आपके पास पार्टॉर्च में या टेंसरफ्लो में, पार्टॉर्च और टेंसरफ्लो का नाम सुना? पार्टॉर्च एंड टेंसरफ्लो आर बोथ डीप लर्निंग लाइब्रेरीज। तो लाइक यू हैव प्री ट्रेन्ड मॉडल्स, फॉर एग्जांपल जैसे आपने मुख्तलिफ प्री ट्रेन्ड मॉडल्स जो आपके पास इमेजेस के लिए दस्तयाब हैं, मोस्ट ऑफ देम आर ट्रेन्ड ओवर more than 1 million images, and they can predict more than, I guess, 1,000 different classes. So classification problems can be quite big. Most often we have like limited number of classes. Okay. Yes no के अलावा like अगर आप terminology की बात करें तो आपको yes no के साथ साथ लोग ये इस्तेमाल करते हुए मिलेंगे like true or false, similarly 1 or 0, right? So these are just the representations that can be possible जिन्हें लोग इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं, right? लोग negative positive का word भी इस्तेमाल करते हैं. For example, one thing is called say like negative and one thing is called positive. Now इस positive और negative का मतलब in spirit positive और negative नहीं है. It's just classification outcome. For example, is this spam? Positive could mean yes, it is a spam. So in that way, positive is a negative thing, right? And negative means no, it is not a spam. Similarly, for the case of tumor, it could be is this tumor malignant? Negative means no, it is not malignant. And positive could mean, तो basically आपने positive का क्या मानी लेना है, negative का क्या मानी लेना है, इसी तरीके से 1 का क्या मानी लेना है, 0 का क्या मानी लेना है, ये आप पर depend करता है how do you take it. So like you can take it either way. But this is usually like the common case. Classes के अलावा एक और टर्म जो बहुत commonly इस्तेमाल की जाती है वो categories की टर्म है, right? So like people call them classes, people also call them categories. Okay. So the first case that we saw was so like we had this tumor malignancy thing, right? So we say that okay, this is where we have 0 and this is where we have 1. This is say no and this is say yes. यार ये भी चेयर है, इधर आ जाए if you're feeling awkward, यहाँ बैठना है तो यहाँ बैठ जाए, बैठ जाओ. Okay. Okay, so for example, ये example आज हमने शुरू में देखी थी when we were talking briefly defining classification के classification का क्या मतलब होता है. So for example, on the horizontal axis we could have size, right? And on
the vertical axis we could like associate the class or the outcome of that. So for example, we say that is it malignant or not malignant, right? So basically हम ये कह रहे हैं कि हम इसको देखते हैं कि जैसे जैसे आपका साइज जो है वो बढ़ रहा है अगर ट्यूमर का, so the chances of it being malignant are kind of increasing. So these are the cases when like the tumor is not malignant, and these are the cases when the tumor is malignant, right? अब सवाल ये है कि हमने रिग्रेशन की बात की पहले. रिग्रेशन में हम क्या करते थे? We were fitting a line over the data. और हमारा एम क्या था कि वो जो लाइन है वो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स के ज्यादा से ज्यादा करीब तक हो. हम उस लाइन को सबसे बेहतर लाइन तस्वर करते हैं जो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स के ज्यादा से ज्यादा करीब हो, राइट? सो और उसकी बेसिस के ऊपर हम एक पॉइंट को अगर हमें लाइक इनपुट्स और उसके मुताबिक हम वेट्स एडजस्ट कर सकते हैं और फिर हम किसी पर्टिकुलर इनपुट के लिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे हाउस प्राइस अगर करें तो इस अगर हमारे पास स्क्वायर फीट में इतना एरिया है, नंबर ऑफ बेडरूम्स इतने हैं, तो बेस्ड ऑन दैट जो हमने मॉडल उसके ऊपर फिट किया हुआ है उसके मुताबिक हम एक प्राइस प्रेडिक्ट करके बता सकते हैं कि ये इसकी प्राइस हो सकती है, राइट? अब क्लासिफिकेशन के केस में हम इस चीज को कैसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे? ज़ाहिर है क्लासिफिकेशन के केस में हमें कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं बतानी बल्कि हमें यस नो में आंसर देना है इस केस में. क्योंकि ये बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो हमें इसके केस में यस नो के अंदर जवाब देना है. जस्ट इमेजिन कि जो कुछ अभी तक हमने सीखा है हम उसी को इस्तेमाल करते हुए अगर इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करें, यानी हम रिग्रेशन ही का इस्तेमाल करने की कोशिश करें, तो मोस्ट लाइकली हम यूं कहेंगे कि हमारी रिग्रेशन लाइन इस डेटा पे कुछ इस तरीके से फिट होती नजर आती है, राइट? काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेशन, राइट? So we'll be like modeling it like that. Okay. If for example और हमारी prediction outcomes क्या है 0 या 1, ठीक है? अब अगर हम रिग्रेशन लाइन की बेसिस के ऊपर ये फैसला करना चाहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर के आपने डेटा दिया है इस डेटा के अंदर आपको डिसाइड करना है कि जो ट्यूमर है वो मैलिग्नेंट है या नहीं है, तो रिग्रेशन लाइन की बेसिस के ऊपर मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जनाब आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल let's say this is the point which is 0.5. आप 0.5 पे एक थ्रेशोल्ड बाउंड्री ड्रॉ कर लें, ठीक है? और आप ये कहें कि जी ठीक है ये 0.5 पे हमने लाइन ड्रॉ कर दी है, इसके इधर जो आपको कैटेगरीज मिलेंगी उनको आप 0 कह देंगे या बेनाइन कह देंगे, नॉन मैलिग्नेंट कह देंगे, और इस साइड पे जो कैटेगरीज मिलेंगी उनको आप मैलिग्नेंट करार दे देंगे, राइट? सो वो काम जो हम रिग्रेशन से कर रहे थे कंटिन्यूअस वेरिएबल्स को प्रेडिक्ट करना, यहाँ हम क्लासेस के केस में भी हमने कोशिश ये की है कि हम उसी रिग्रेशन को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा तरीका अडॉप्ट कर लें जिसके जरिए हम प्रेडिक्ट कर सकें कि कोई लाइक क्लास कौन सी है, द लेफ्ट क्लास और द राइट क्लास और व्हाटएवर. सो लाइक फॉर एग्जांपल इस केस में हमने क्या किया कि हमने 0.5 पे एक थ्रेशोल्ड ड्रॉ कर ली, राइट? ओके, नाउ दिस सीम्स ऑलराइट फॉर द मोमेंट, लेकिन रिग्रेशन बुनियादी तौर पर, लीनियर रिग्रेशन पर्टिकुलरली बुनियादी तौर पर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के साथ बहुत अच्छी दोस्ती नहीं रखता. जस्ट फॉर इंस्टेंस अगर हम इसको यूं डेमोन्स्ट्रेट करें दैट यू हैव another point which is like say here, right? Now having this, like we had 8 data points and we found the best line according to those 8 data points. Now we have the 9th data point which is relatively far away from this, right? Like its size zara zyada hai, right? It's a bigger tumor. Will the regression line change? Obviously regression line will now try to attempt to fit the data relatively better and will somehow go like this. रिग्रेशन लाइन तो चेंज होगी क्योंकि उसने उस पॉइंट को भी कवर करना है, तो वह इनसे थोड़ा दूर जाएगी और इसके थोड़ा करीब जाएगी, राइट? सो वी आर जस्ट ड्राइंग एन अप्रॉक्सीमेट लाइन ऑब्वियसली, राइट? नाउ बेस्ड ऑन दैट अब अगर हम अपना 0.5 इस लाइन के मुताबिक ड्रॉ करें तो वो तकरीबन यहां पे बनेगा, राइट? वी विल हैव आवर 0.5 एट दिस पॉइंट and what will it result in is that you will be drawing a line somewhere here, right? And now you will be saying okay based on that intuition कि हम 0.5 पे डिसाइड कर लेते हैं, midway डिसाइड कर लेते हैं, 0.5 से इधर वाली क्लासेस
नॉन मैलिग्नेंट या बेनाइन, और इधर वाली क्लासेस। अब अगर आप देखें इसको, तो यू से 0 हियर एंड 1 हियर, नाउ यू आर misclassifying the points. Now based on how far this point is, it could be कि आप 2 या 3 पॉइंट्स को misclassify कर रहे हैं, right? तो linear regression is not a robust method to fit for classification. Linear regression classification problems के ऊपर अच्छे तरीके से fit नहीं होता. It is good enough for like quantitative predictions, but for category predictions it is not considered a suitable method. तो हमें बुनियादी तौर पे इस मेथड को थोड़ा सा तब्दील करना पड़ेगा, राइट? इस केस में हमने एक चीज तो चलो ये डिसाइड की कि जो हम बेसिकली प्रेडिक्शन कर रहे थे, हमारे पास लाइक फॉर एग्जांपल इनपुट साइज है x, लाइक इनपुट है हमारे पास एक x, तो हम उसका एक पैरामीटर लेते हैं w x plus b. हमारी प्रेडिक्शन तो इसी पे आ रही है ना, we had a function which was defined on w and b, and that was like dot product of w and x, and we were adding b to it. This is how linear regression works, right? So you multiply, अगर आपके पास multiple inputs हैं तो multiple weights होंगे और आप उनका dot product ले रहे होंगे, right? Okay, and हमने threshold क्या रखी, that if this value is greater than or equal to 0.5, तो like you say that the prediction is, or y hat prediction कह लें या y hat कह लें, prediction is 1, and if it is less than 0.5, you say that the prediction is 0. Okay, you have these two categories. So आप इस basis के ऊपर, लेकिन हमने अभी ये demonstrate करने की कोशिश की है कि linear regression classification को अच्छे तरीके से handle नहीं करता. So we need to like find something better than this. हमें इससे कुछ बेहतर तलाश करने की ज़रूरत है. So the thing that we will now talk about is called logistic regression, right? Although it is called regression for some historical reasons, but actually it is not for regression, it is for classification, right? So 0.5 से आप किस बेस पे आप लोग इसको select करें? like in this case हम this is, देखिए एक बात, हम ये जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग का बुनियादी मतलब क्या है? मशीन लर्निंग का ऑपोजिट क्या है? चले हम ये कहते हैं मशीन लर्निंग का ऑपोजिट क्या है, राइट? जी, manual learning. So is it automatic learning and that is manual learning? Okay, just for instance, just stop here. आपने Python के अंदर छोटे मोटे कोड्स लिख के देखे, right? You are not doing machine learning. मिसाल के तौर पे आपने कहा जी 2 नंबर इनपुट लें, उनको ऐड कर दें. मिसाल के तौर पे आपने कहा जी एक स्ट्रिंग लें, उसको उल्टा करके प्रिंट कर दें. मिसाल के तौर पे आपने कहा जी एक लिस्ट लें, उसमें से सबसे बड़ा नंबर फाइंड कर लें. So on so forth, and you could make bigger programs. मिसाल के तौर पे आपने कहा जी एक CSV फाइल रीड करें और काउंट करके बताएं कि इसमें कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, हर रो का मैक्स मिन फाइंड करके दे दें, या so on so forth. You could do so many things. You were not doing machine learning, right? So what makes an algorithm machine learning algorithm? And what says no, this is not machine learning algorithm? जब आप exhaustively किसी चीज को खुद solve करते हैं, procedure सारा खुद बताते हैं, that's not machine learning. That's a conventional algorithm, right? But where you feel that no, we don't know that how will we be solving a problem, हमारे पास सारे steps listed नहीं हैं, हमें कोई ऐसा मेथड इजाद करना पड़ेगा कि मशीन खुद से ये देखकर लर्न करे कि उसे क्या करना है, राइट? जब हम इस किस्म के प्रॉब्लम्स को डील करते हैं और हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं, तो इसका एक मतलब ये होता है कि अब आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन की दौड़ से बाहर निकल गए. When we were doing other algorithms without machine learning, we knew exactly what we were doing and we were able to solve exactly what we were trying to solve. In case of machine learning, ये exactness निकल गई. We are now talking about some kind of good guessing, good approximation, like
a decent enough solution, right? अब जब हम ये सवाल करते हैं कि ये 0.5 कैसे तय कर रहे हैं, right? This is intuition based thing. ये like we look at it with the naked eye, right? And similar thing is like inculcated into algorithm कि तुमने अपनी intuition से इस बात को तय करना है. तो मिसाल के तौर पे हमने ये कहा कि आपके पास दो क्लास है, एक क्लास 0 है और एक क्लास 1 है, ठीक है? अब आपके पास जो जवाब आएगा वो 0 और 1 के दरमियान फ्रैक्शन नहीं हो सकती, ठीक है? आपको कहीं लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका प्रॉब्लम आपसे ये कह रहा है कि मुझे फ्रैक्शनल नंबर नहीं प्रेडिक्ट करना, बल्कि मुझे या ये कहना है कि इट इज मैलिग्नेंट, या ये कहना है कि इट इज नॉट मैलिग्नेंट. मेरे पास दो कैटेगरीज हैं, ठीक है? अब 0 और 1 के दरमियान की रेंज को मुझे तय करना है कि किस पॉइंट पे मैं ये कहूंगा कि अगर थ्रेशोल्ड इससे कम है तो मैं इसे नॉन मैलिग्नेंट कहता हूं, और थ्रेशोल्ड इससे ज्यादा है तो मैं इसे मैलिग्नेंट कहता हूं. You can disagree on that. Based on empirical data, based on the doctor's input and so on and so forth, you could say no. In this case, maybe you could draw this boundary at 0.7, right? So this is not a hard and fast rule. This is just an intuition-based thing. कि अच्छा इस केस में हम neutrality को observe करते हुए 0.5 पे threshold तय कर लेते हैं, right? Okay. Anyway, we'll now be like moving towards like logistic regression. Logistic regression basically क्या करता है? Let's just like redraw something like that. Instead of giving you a linear line, logistic regression tends to like model things something like this. So previously जो line आपकी इस तरीके से जा रही थी, now it has become more of an S-shaped line, right? ये line कैसे आती है, कैसे बनती है, इससे कतई नजर फिलहाल हम सिर्फ इसको देखकर ये कह सकते हैं ये बेहतर है, right? A line which is like instead of fitting linearly is more of kind of curve, and like it continues straight on as long as it is finding the points below there and continues straight on. Now if there is a point like here, that's okay, you can go on like that, right? अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे ये लाइन कैसे बनती है, we will be talking about it shortly, but we are just saying that if we have this kind of line, then by contrast to that straight line, this line seems to be a better line to like classify things properly, right? Okay. So logistic regression बुनियादी तौर पे आपको आपकी बाउंड्री को एक और तरीके से फिट करने की सलाहियत प्रोवाइड करता है, right? जो बेसिकली लीनियर रिग्रेशन के अंदर नहीं है. लीनियर रिग्रेशन वाइडर क्वांटिटीज के ऊपर तो सूट करता है, लेकिन जब आपको क्लासिफिकेशन करनी है तो उसके ऊपर वो कोई अच्छी बाउंड्री आपको ड्रॉ करके नहीं देता, बिकॉज लीनियर है तो लाइक इट विल बी ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन, इट विल नॉट हैव दैट काइंड ऑफ कर्वी बाउंड्री. ओके, now there is a like function called sigmoid function that is called like 1 over 1 plus e raised to power minus z. Now what is minus z? We will talk about it. What is minus z? Right? This is called 1 over 1 plus yes 1 over 1 plus e raised to power c. This is called sigmoid function, right? It is also called like sometimes it is also called logistic function, right? So we call it like sigmoid function commonly. It is also called like sometimes it is also called logistic function. Logistic function के अंदर ये सलाहियत है कि वो उसकी आउटपुट महदूद होती है. उसकी आउटपुट आप उससे जो भी इनपुट दे रहे हैं वो उसकी आउटपुट को 0 और 1 के दरमियान महदूद कर देता है, ठीक है? कैसे कर देता है? फॉर एग्जाम्पल इफ वी लाइक टेक अ लाइन, हम इस डोमेन में एक लाइन बनाते हैं, राइट? सो हियर वी से फॉर एग्जाम्पल दैट वी हैव लाइक say for example this is like minus 10 and say this is plus 10, right? So minus 10 से 10 तक something like that. It goes like this. It goes something like
this. How? आपका फॉर्मूला क्या है? 1 over 1 plus e raised to power minus c से आपका जो ये एक्सिस है ये z को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? Just say that the quantity of z is ranging from -10 to plus 10. Okay. So the formula is 1 over 1 plus e raised to power minus z, right? Just for instance, if you allow me, मैं यहाँ जरा बड़े नंबर ले लेता हूँ ताकि मैं बाउंड्रीज को क्लियर कर सकूँ. तो मैं कहता हूँ यहाँ मेरे पास -100 है और यहाँ मेरे पास 100 है, right? Just to make the difference more clear, right? Now I put this value in this formula. That will be 1 over 1 plus e raised to power minus 100, right? Now e raised to power minus e, what is e? It is a mathematical constant which is roughly equal to 2.7 or so, right? E की value तकरीबन 2.7 के पास होती है, right? Now if you see e raised to power minus 100, तो ये वैल्यू बहुत बड़ी होगी, बहुत छोटी होगी, कैसी होगी? It will be very small value, right? You are saying 2.7 raised to power minus 100. अच्छा, अब जैसे 2 raised to power 2.7 raised to power minus 100 बहुत छोटी वैल्यू है, इसी तरीके से अगर आप 2 raised to power 2.7 raised to power 100 करेंगे तो वो बहुत बड़ी वैल्यू होगी, right? So यहाँ आपके पास क्या वैल्यू होगी? 1 over 1 plus e raised to power minus minus plus, right? So this value will be very big and that value will be very small. We can say that जितना like ये power बड़ी होगी ये उतनी ही value 0 के करीब होगी. So like if it is very small we will say it is almost close to 0. That means the value that you will get here is 1 over 1 plus 0. That is 1 over 1 and that is 1. Right? Similarly, the value here will be very big. Right? Now, if the denominator is very big and you are saying 1 over something very big, that will be almost 0. 1 over 10 is 0.1. 1 over 100 is 0.01. 1 over 1000 is 0.001. So if it is getting big, this is approaching to 0, right? So this is almost, right? So that means that on the edges, logistic regression will be giving you 0 on one edge and 1 on the other edge, right? And what is in between? Now here z is 0. ये origin है तो यहाँ value 0 होगी. What is the value here? 1 over 1 plus e raised to power 0. E raised to power 0 is 1. So this will be 1 over 1 plus 1. That is 1 over 2. That is 0.5. That's what we were saying. That logistic regression gives you the value 0 on one edge, 1 on the other edge and 0.5 somewhere in the middle. हम कुछ ऐसी ही चीज चाहते थे कि हम बजाय इसके एक स्ट्रेट लाइन को बाउंड्री के तौर पे इस्तेमाल करें, हम एक रिलेटिवली कर्वी फंक्शन बनाएं जो हमें क्लासिफिकेशन को, हमारी क्लासिफिकेशन को जरा अच्छे तरीके से हमारे सामने पोर्ट्रेट कर सके. So we can say that okay, let's represent this function as g of z, right? ये फंक्शन है जो आपने z पे डिफाइन किया हुआ, which is equal to this one, and the range of g of z would be between 0 and 1, right? Now it's a good function for us. हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन तक का फासला इसलिए तय किया है कि हम लीनियर रिग्रेशन को क्लासिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं समझ रहे थे. तो अब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरफ गए हैं जो हमें लगता है कि क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए ज़रा ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है. ओके, तो अब अगर हम इस फंक्शन को थोड़ा सा मजीद डिफाइन करें, लाइक दिस इज लाइक g of z. What is g of z? What is z here? Z is basically, it's like g of, like this z is basically जो like आप जो value उसके अंदर लेके आ रहे हैं, that is what z is, right? That z will be calculated based on